Good evening, all. Namaste. Welcome to National Nutrition Month 2023. We are continuing our web series. This is the fifth series. Yes, Neeraj, I started already. YouTube live. Okay, ma'am. So today topic is everyone know about the eat your drink and sorry, I forget. 1 second. Good evening, all. Namaste. Welcome to the National Nutrition Month 2023. And we are continuing this web series. This is the fifth series. And today we are going to take a very interesting topic. And myself, Padma Katti, I am a holistic nutrition coach. And I have 15 years of experience in this field. And today we are taking the very interesting topic that is the a holistic approach towards the nutrition. That is the eat your drink and eat your food, drink your food and eat your drink. So we are continuing this series and welcome to Angel. Angel is Angel Mishra, dietitian Angel Mishra. She is based from Ghaziabad and she is a holistic nutrition coach and practicing since 2 years. And welcome Angel, over to you. Thank you so much, Padma ma'am, for the warm welcome. So, should I start? Yes. Okay. So I'll be sharing the screen, right? Yeah. Okay, ma'am. Can you see? You can do the full screen. Yeah, just a moment. Yes, now is it fine? Yeah. Okay. So today's topic is science behind eat your water and drink your food. Yes, eat your water and drink your food. So this is a very different phrase. ये हम नहीं सुनते हैं. So definitely it's a very interesting thing. So where does it come from? It comes from Ayurveda, which basically emphasizes on being mindful, यानी कि conscious रहना. जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, whatever we are doing, हर एक चीज में Ayurveda emphasizes on being mindful. So what does actually being mindful means? So basically being aware in the present moment, यानी कि आप जब कोई खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, specifically in terms of eating and drinking, you have to be conscious कि आप क्या खा रहे हैं. All your senses should be aware कि आप actually क्या खा रहे हैं, क्या taste है, क्या texture है. That is being mindful. Not that mindful कि mind में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो mindful नहीं. जस्ट अ वेरी बेसिक माइंडफुल कि आपका माइंड एकदम फ्री हो, आप फोकस कर पाए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल कुकिंग एंड ईटिंग. अब यहाँ मैं कुकिंग की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम ये ध्यान नहीं देते कि हम किस इन्वायरमेंट में खाना बना रहे हैं या हमारी एनर्जीज क्या है. बट एक्चुअली उससे फर्क ये पड़ता है कि वही एनर्जी, वही वाइब्रेशंस आपके फूड में जाती है. यहाँ पे जो आप लेडी देख पा रहे हैं, शी इज हैप्पी. दैट मीन्स जो भी वो खाना कुक करेंगे, दैट विल कैरी ऑन द पॉजिटिव एनर्जी, happiness basically. ठीक है. And that will again nourish your own system. So it is a very major thing. जब हम आयुर्वेदा में भी बात करते हैं कि जो हम खाना बना रहे हैं वो हम किस इंटेंशन से बना रहे हैं, हम किस एनर्जी के साथ बना रहे हैं. दैट इज द थिंग. देन अब इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स. सबसे पहले इंगेजमेंट ऑफ ऑल द सेंसेस. जैसे कि मैंने कहा कि जब हम माइंडफुल होते हैं तो हमारे सारे सेंसेस अवेयर होना चाहिए. लाइक हमारी नोज, हमारी आईज, हमारे टेस्ट बर्ड्स, तभी we'll be able to experience the aroma, the texture, the taste. ठीक है. Then secondly, it helps you in recognizing your hunger and satiety. Hunger and satiety यानी कि हमें कब और कितना खाना है, कैसे क्या चॉइस करना है. जब हमारे सेंसेस सही टाइम पे काम भी करेंगे, हम पूरी माइंडफुलनेस के साथ खाना खाएंगे, तो डेफिनेटली ब्रेन से जो आपके स्टमक तक डाइजेशन के लिए सिग्नल्स है वो राइट टाइम पे जाएंगे. यानी कि अगर आप अपना फेवरेट खाना भी खाना चाहते हैं तो भी आप उसको उसी अमाउंट में खाएंगे जिस अमाउंट में आपको खाना चाहिए. एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन वेट लॉस.
Also enhancing your satisfaction, कि आपको खाना और enjoyable लगेगा. उसके लिए हमें कोई रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, अपना कोई स्पेशलिटी खाना खाने की जरूरत नहीं है. इवन आपका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम खाना खाएं, उसको भी हम enjoy कर सकते हैं. So करना क्या है? How can we do it? It's very simple, very easy. Chew your food and water. अब ये तो हम हमेशा ही करते हैं, कोई नई चीज नहीं है. But here's the catch. Ayurveda कहता है that you have to chew your food 32 times. Yes, 32 times because we have 32 teeth. Okay? So अब मैं मानती हूँ कि definitely we don't have this much time that we can chew each and every bite 32 times. But at least we can try to chew it enough कि वो semi solid हो जाए, at least some a little bit of liquid और semi solid consistency में आ जाए. क्यों? क्योंकि जो हमारा digestion है, that starts from the mouth itself. Yes, it starts from the mouth. Okay? अब इसके बाद एक मेजर चीज कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लाइक क्या चीज हमारे को और क्या क्या चीजें मिलती हैं ऐसा माइंडफुल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करने से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जितना आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, उससे क्या होगा, आपने जैसे कोई बाइट लिया, यू स्टार्ट च्यूइंग, तो वो पीसफुलनेस की वजह से ही, कामनेस की वजह से ही जो आपका फूड का ब्रेकडाउन है वो होगा. ग्रेजुअली आपका फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा यही माउथ में, एंड द सलाइवा विल बी मिक्स्ड. जितना थरली आपका सलाइवा मिक्स होगा, इट विल हेल्प द जो आपके सिग्नल्स हैं फॉर द डाइजेशन हार्मोन्स के रिलीज के लिए, वो उतना इजीली जाएंगे. एंड ऑल्सो let me tell you, जितनी भी problems है, constipation, diarrhea और any sort of problem related to gut, it starts with here. ठीक है? So if we emphasize on doing things mindfully, specifically drinking and अपना food लेना, so ये सारी problems अपने आप खत्म हो जाएंगी. ठीक है? Then अब हमने खाने की बात कर ली, पानी को कैसे लेना है. सो पानी के लिए मैंने बहुत नोटिस किया, इवन हम भी कई बार ये चीज कर लेते हैं, बीइंग अ डाइटिशियन, की टाइम नहीं मिलता तो बहुत एकदम जब भी टाइम मिला बहुत सारा पानी पी लिया. नहीं, वो नहीं करना है. उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो भी डाइल्यूट होंगे. एट द सेम टाइम जो हम जिस सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ब्रेन से आपके स्टमक और बाकी सारे डाइजेशन हार्मोन्स और ये सब रिलीज करने के लिए जो हमें सिग्नल्स पहुंचाने हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा. सो हमें ये नहीं करना है. सेकेंडली, कि हमें अपना पानी का टाइम भी फिक्स करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 5 बारी मील लेते हैं, उसी तरह से आपको ये कोशिश करनी कि every 2 hours, every 1.5 hour, try to take a glass of water. It will be sufficient. At least 10 to 12 glasses is what we say. और उसके लिए अब तो आजकल ऐप भी है, यू हैव सो मेनी एप्स दैट रिमाइंड यू कि आपको इतने स्टेप्स चलना है, तो डेफिनेटली वाटर के लिए भी आप कर सकते हैं. ठीक है? देन थर्ड, नो आइस कोल्ड वाटर. स्पेसिफिकली अब ऑब्वियसली हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंस है, बट आई विल से कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है जब हमारा पानी इज एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर. दैट इज नेचर्स बेस्ट. ओके, सो इसके लिए भी हमें ये ध्यान देना है. इफ यू वांट टू एंजॉय कोल्ड वाटर, मैं कहूंगी आप घड़े से पानी ले सकते हैं, अर्दन पॉट्स, दैट आर बेस्ट. ठीक है? और जल्दी जल्दी में हम पानी जब पीते हैं तो हम खड़े होके पानी पीते हैं, स्टैंडिंग या वॉकिंग, ये नहीं करना है. हमें कोशिश करनी है कि हम बैठ के आराम से पानी पिए. टेक अ मोमेंट, थोड़ी देर आप बैठे, उसके बाद आप पानी पिए. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. So that's all about this topic. Thank you. Thank you so much, Hinjal, for a crisp and clear presentation. You can stop the screen share. Exit. Yes, ma'am. Okay, for this topic, if you have any questions, audience, so please drop a message in chat box. Otherwise, you can raise your hand. If you have any related to this topic about the food and about the drinking
we can add water after meal, before meal, or anything. If you have any queries and about the presentation, drop me a message. I hope many are clear about the topic, right? And one question that is general came from many clients and also in general public engine. So after having the meal, so at what time you can have the water? Means हम लोग तुरंत पी सकते हैं, otherwise if we can take some time, and what is the behind reason? So we can definitely take water, but after half an hour to 45 minutes. That is the ideal time I suggest. Okay, after Hmm. 30 to 45 minutes, because directly after meal is not good. Again, it Hmm. will be slowing down the digestion, which is not beneficial for any of us. So yes. Okay. Thank you, Angel. And I would like to add some points here. So one is the digestive enzymes, okay, right, about the pH. If we can drink more water, so we can dilute our acidic pH, right? So that will cause a discomfort in our digestion, and also some gastric distension. Means if we are having more water, more liquid, so we feel like our stomach will feel full. So later we can feel, some people will feel the bloating. So this is the indication that we can take, means 80%, our stomach should be filled with the only 80%, 80 to 60% only. बाकी हमको खाली रखना है for good digestion and nutrient absorption. For scientists saying that, so some nutrient absorption will be less if we are having more water, right? So digestion की जो process में होती है, so that will cause the discomfort in the nutrition absorption. These are the three reasons we don't take that much of water after the meal, right? So any more questions, coaches? Okay, so I hope nobody will have the question. Yes, Samantha. I Please, have a question. yes, Rashida. Good. Ma'am, I have recently heard that you cannot drink water right before sleeping. Mm, how was Rashida, it? we How was have, आपकी आवाज में है ना थोड़ा पीछे से साउंड आ रही है, क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन. One more try, you can try one more time. am I clear now? Okay, continue. Ma'am, it is said that you shouldn't drink water right before sleeping. So is it advisable or just hype? Okay. Rashida is asking what I understood. सोते टाइम पे पानी नहीं लेना है, रशीदा वैसा बोल रही है. हाँ, पानी Yes, ले ma'am. सकते हैं या नहीं ले सकते? ये Yes, ma'am. एंजल, कैन यू टेक इट? Ma'am, you can answer. Okay. So when we are going to sleep, why we can say that if some persons have the any diabetic, other maybe any other health complication, okay, that is not advisable to before going to sleep, don't take the water. But if normal people also, if we are going to bed, okay, if we are having 100 ml, 200 ml, that is fine. But more than that, what will be? It will be cause a disturbance in between. Okay, not a major problem, but it will cause the disturbance in our sleep cycle, right? जो sleep cycle की in between में बहुत सारे disturbance आने की chance होती है. Healthy person also, if they have diabetic or any other health issues, that will be causing more disturbance. So that's why we can advise that before going to sleep, don't have the water or any liquids. Okay, But small after, amounts can yes, be taken. yes, small amount we should be included. 100 to 200 ml, that is not cause this sleep disturbance. Thank you.
Thank you, Rashida. And Atulya Pratapan is asking, is it okay to have water with meals? Angel. Yes, ma'am. So the question is, is it okay to have water with meals? Yes. See, sometimes we feel कि प्यास लग रही है. At that moment, we can take a sip or two. Again, the similar thing that we can have a little bit of water, not much, because again it will hamper the digestion. So साथ में पानी पीना is not advisable, first of all. जो भी हमारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हमें डाइल्यूट होने लगेंगे. तो साथ में पानी इज नॉट एडवाइजेबल. अगर आपको प्यास लग रही है, मिर्ची लगती है, तो डेफिनेटली हम पानी पीते हैं. सो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, बट यस, नॉट अ ग्लास और एक ग्लास पानी पी लिया, ऐसा नहीं है. तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं. Yes. So we can add in between little bit of water because we want taste in different foods. Na? So that will enhance our digestion also, but that is the limited amount, very. Like if we are having buttermilk, that is the other concept, right? But water in between you can have, but very limited. And one more question, Nasreen is asking, according to a person body weight, how much water should drink? Can you take it, Amy? Ma'am, you can answer this. Okay. So this will be having the one calculation according to person body weight. Okay, 32.1 kg weight divide वो वाला होती है, but in basically for according to person, like in 12 to 14 classes, not in the included up to body weight, but normal persons. Okay, according to Indian, 12 to 14 and glasses for this means 2.5 to 3 liter up to, that is the sufficient. If we can go to the customize, so we can calculate, but that much is not needed. Calculation की जरूरी नहीं होती है. But per person 2.5 to 3 liter is enough. If they are healthy and they are not working outside, okay, जो बाहर environment के depend भी होता है. If you are staying at indoor, that is the enough. And Nazia Sultana is asking, I have read that person's body should be filled by 1/3 of food, 1/3 of water, and 1/3 of air in Ayurveda. So, what is the concept behind it? Yes, Sanjay. So, in Ayurvedic principle and Ayurvedic concept is different. Okay, so every concept is different. Naturopathy have their own principles, and every science behind the principle is different. According to Ayurveda, not only Ayurveda, if modern science also says we can feel the up to 80%, 70 to 80%, because we need to absorption अच्छा होना चाहिए and we need to digestion अच्छा होना चाहिए, right? Bloating जैसा अभी already I included bloating का अगर we if you feel that water gastric distension, right, that will be called the bloating. If some person is having the acid reflux also, that will means cause more uncomfortability. So that's why you can listen simply to your stomach, not your brain. So that time you will stop the food. Not only 80%, just listen to your instinct. I hope I answered this question. Sir, you want to add any point for this question? Okay, so before that, I will add one more. Priyanka, madam, I have a doubt. Ma'am, in drinking water also, we should like the 80% rule is there for the water also. Sorry, Rashida, please you can drop a message in chat box because your voice is echoing. Madam, I have a doubt. Sometimes we take buttermilk liquid with meals or any flavored drinks, soups with dinner, etc. Apart from water, does this
also hinder digestion. Okay, sir, I will repeat the question. Sir, you can give the answer for this question. Ma'am, I have a doubt. Means she is asking. Yes, Rashida. She is asking like buttermilk, okay, milk with liquid and other flavors like soups we can add. That is the same thing. And if we are having water, also same thing. She is asking like that. Means in digestion में कुछ problem होगा. We are adding soups and buttermilk and also water. Yes, both are the different. Water is the different. If you are having buttermilk is the alkaline base, right? Buttermilk and soup are the different because we are adding some different means with milk and buttermilk is the alkaline, okay, different. And that also we are having up to below the maximum is 350 ml, 300 ml. इससे maximum नहीं होता है. Soups also. And water is the plain water. So that's why that hinder the means that will cause the, if you are having more, that will cause the means hinder the digestion issues. Rashida is asking 80% rule also, water consumption also. Rashida, you are asking about when we are having the meal, otherwise in daytime. If daytime, that is the different thing. Okay, both. Okay. So in normal time also, if you are having, see our gut will be absorption up to 50 to 60 ml. Okay, one time. If you are having more, okay, that will be going to filter with the kidneys. So when you are, that's why we can say this, sip some water. Okay, drink water नहीं होता है, sip some water. तो वो रूल कभी भी अप्लाई होता है. अगर आपको अच्छा आपकी क्लेंसिंग अच्छा होना चाहिए तो जस्ट ट्राई 50 to 60 ml थोड़ा थोड़ा सिप करना पानी आप आदत कर दीजिए तो यू कैन लुक एट द डिफरेंस. हमारा जो क्लेंसिंग की प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा होते हैं. बट व्हेन यू आर हैविंग लाइक सम पीपल विल ड्रिंक 500 ml एक ही बार मीन्स दे कैन टेक 3 to 4 hours ऑफ गैप एंड लोग को बहुत थ्रस्ट दे कैन फील थ्रस्ट एंड दे कैन हैव द ओनली वन टाइम लाइक 500 ml 600 ml. Okay, that is not advisable. Can take up to 100 to 200. Okay, Rashida is saying thank you. Thank you, Priyanka. Angel, I would like to ask one question. If we are having that, you can explain in first slide. So if peaceful environment is not there, okay, that will also cause the, so you can add more points to that slide. How that will be if we are eating in peaceful environment, so how that will be helpful for digestion, good digestion, and also you are added weight loss also, bonus too. Yes. So firstly, peaceful environment, I'll tell. Yes. Just should I share the screen or like? No, you can explain. Just explain. Okay. So for example, हम TV देखते हैं. We are using the gadgets. कुछ भी और कोई अगर हम कोई भी क्राइम सीन या क्राइम सीरियल देख रहे हैं, उसके बाद हम खाना बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वाली जो एनर्जीज है वो सारी आपके दिमाग में वही चीज घूम रही होती है जब आप खाना बना रहे हैं. एंड दैट इज नॉट गुड. मतलब आपका थॉट प्रोसेस कहीं और ही जा रहा है, आप बना खाना रहे हैं, वो एनर्जीज वो आप एक तरह से what we can say कि mindful हो जाता है. Not that वाला mindful, but our mind is actually captured, एक तरह से फंस जाता है उन सारी चीजों में. तो अगर हम इस तरह की चीज कोई भी चीज अगर हम ऐसी देख रहे हैं, या मान लीजिए किसी का आपने कोई ड्रामा, सीरियल ड्रामा, ज्यादातर लोगों के घर में ड्रामा सीरियल्स हम ये देखते हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, तो हमारा माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है उसी चीज से. एंड अगर हम वही चीज को लेके हम खाने पे ना ध्यान देके कि हम क्या खाना बनाने जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये चीज हमारा खाना खाते के टाइम पे भी अप्लाई होती है. अगर हम गैजेट्स और स्पेसिफिकली, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन जरूर होता है, सो अगेन खाना बनाते टाइम भी एंड खाना खाते टाइम भी, दोनों ही जगह पे हमें ये ध्यान देना होता है कि
कोई भी गैजेट्स, स्क्रीन टाइम, ये चीजें ना हो, हम जितना अपने सेंसेस को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द फूड, अबाउट व्हाट इज इन आवर प्लेट, अब हमारे सामने क्या, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए ज्यादा कारीगर काम करेगा रादर देन लुकिंग एट आवर स्क्रीन्स, क्योंकि हम तो खाना फिर जस्ट फॉर एक तरह से पेट की भूख को खत्म करने के लिए खा रहे हैं. वी आर नॉट नरिशिंग आवरसेल्व्स, we are basically just trying to feed ourselves, and that is not going to help. आप टीवी देखते देखते खाना खाएंगे तो डेफिनेटली यू विल ईट मोर. फेवरेट सीरियल आ रहा है, अच्छा एक रोटी और खा लेते हैं, अच्छा मतलब पार्टी कर लेते हैं, हाउस पार्टी है तो म्यूजिक चल रहा है, डांस करते करते आपने सोचा अच्छा एक ड्रिंक और ले लेते हैं, एक ये मसाला वाली पीनट्स एंड ऑल ये सब और खा लेते हैं. सो दैट्स हाउ, माइंडफुल तो होता नहीं है, माइंडलेस हो जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमारा पोर्शन साइज बढ़ गया, देन वी से कि वेट गेन हो गया. अब तो हमने तो ज्यादा कुछ खाया नहीं था मैम, हमने जस्ट एक रात पार्टी करी, कुछ नहीं, आप बताओ डिटॉक्स कर लेते हैं. सो दैट्स हाउ वी गेट क्लाइंट्स कि आपने मैम एक एक दिन की बात है, बस एक दिन पार्टी करनी है, तो दैट्स हाउ इट हैपेंस. Yes, means when we are having the mindful eating, means we can look at the everything, means aroma, taste. So with aroma, we can increase our digestive juices, and we can look at the portion size also, right? So that will add up in weight loss. Thank you. Yes. So thank you, Angie. And now we did not have any. Wow, Angie. Sir is saying wow, Angie. Thank you, Sir, sir. you want to Thank add any you. point? Mindful eating. So we will wind up the session, sir. We don't have any question. Okay. Thank you for joining all of you, and thank you, Angel, giving your valuable inputs. And Thank you we so are much. coming with a next session that is also very interesting, and that is the seventh webinar. And have a good evening, all of you, and thank you for joining once again. Thank you, sir. Bye, all of you. If you have any question, drop a message in group. Okay, so we will take it. I hope all of you there in a WhatsApp group, right? Yeah.